This is Sabahat, and I'm here with a okay. So I'm here with a new topic, and let me just see who is online, and then I can start with the session. Just let me check out. Okay, let me see. So is there anyone over here at the moment? Can I see anyone? Okay, so I'm still looking. Let's see. It's nearly, yes, it's 6 o'clock. Okay. Now let me check out if I can see anyone. Okay, so let's see if I can, find people and then I can start. So, in the meantime, what do you think this session is going to be about? It's not difficult to guess. Okay, so I can see one viewer and there might be others as well, but right now, whatever I'm seeing, I'm just telling you that. So, this session, it's the if you have read the caption is like how to manage. So what do you think? Like there are many things which we need to manage, but there is one particular thing which is the need of time, and most of us are just struggling to get over it, and then we seek different practices and different consultations regarding this particular thing. Um, so I'll just break the silence and let you know what that is. Well, I'm talking about stress. So stress is something which every one of us, especially those who are working, who are in working setups, whether they're remote working or whether they're working in different organizations or institutions or wherever they're working. So this is one thing which is very common, and the earlier you can get it addressed, the better it is for your overall productivity and attainment of goals and fulfillment as well. So I'm not going to go into the details, which walaikum assalam, it's Khalid Khan. Okay, walaikum assalam, Khalid Khan, thank you for joining in, and do pour in your suggestions and comments, whatever you have. So the inbox and the comment box, it's open for your feedback and suggestions, so anyone can pour in their comments and suggestions. What I'm talking about, it's stress. So I'm not going to go into the details uh, the the specific details which can be addressed by a doctor, by a proper doctor. I'm just going to lay out certain strategies and techniques which I have found useful over the years, and which I have tried out, and I find them really they work out if you are having some kind of stress. Um, but then if your stress is very chronical, then I would suggest you that you should always seek advice of a medical professional. I'm not a medical professional. I can just share my insights regarding different experiences I have gone through, or I have known about people who have discussed. So we have discussed these things. Walaikum assalam, Israr. Walaikum assalam, Muhammad Adil. Okay, thank you so much for seeing me live over here. Well, most of the time, I think nearly every week, Monday to Thursday, I come live on Facebook at this time. So it's a normal routine for me. But thank you so much. I guess you join here off and on. But it's always great to see people who I know. They can join and watch me live. Okay, so I'm talking about stress. Now the thing is that these are my own personal experiences and strategies which I have devised over time, and most of these strategies are really successful with other people who have tried these out as well. And since they're really common strategies and anyone can employ it, but if you have some other symptoms regarding stress, and they
can include the anxiety and other forms of stress, then you should always seek medical professional advice. Well, I'm just going to talk about a few of the strategies which are tried and they're really good. And I'm just going to tell you what are the benefits of it as well. So, the number one, okay, I'll take your comment side by side. Um, okay. Yeah. That's true. I have to, send messages directly on Facebook. So those who want to come live or join the session, they can always come. So that's very right. I like your comment. Okay. Um, okay, so I'll just, get on with my topic. So, the number one thing regarding stress is that if you're having stress, what works or reduces your stress level, it's number one thing is regular exercise. So, you when you indulge yourself in some kind of physical activity, it reduces the stress levels, and then there are hormones which lower, and automatically your mood filters they improve. You might have noted this thing like I'll switch to Urdu off and on. कि आप अक्सर देखते होंगे मसलन जो है एट टाइम्स मॉर्निंग में या से आफ्टर ऑफिस, ख़ास तौर पे ऑफिस के बाद मैं देखती हूँ कि स्ट्रेस लेवल्स कंपैरेटिवली हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन द मॉर्निंग. सो उस टाइम के बाद जो है व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप जो है ऑफिस से निकल के वॉक करने चले जाएं या जॉग कर लें, तो आप देखेंगे कि घर जाने से पहले जो है ना आपका जो मूड है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका होता है. अगर आप जो है उसी तरीके से वही सारी स्ट्रेस और वही सारी टेंशन जो आपने ऑफिस में भुगती होती हैं वो उठाकर घर लेकर जाते हैं, तो होता ये है कि वो जो सारी स्ट्रेस है ना वो जाकर आप लोग घर वालों के ऊपर निकाल देते हैं. तो प्रैक्टिकली उनकी जो है उनका फॉल्ट कोई नहीं होता, बट ये कि चूंकि जो है आप खुद इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, एंड एट टाइम्स पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ स्ट्रेस. सो होता ये है कि घर जाकर वो सारा बोगस घर वालों पे निकाल देते हैं, और घर वाले जो है दे आर दे सिंपली हैव नो आइडिया कि भाई ये वेयर हैज़ ऑल दिस कम फ्रॉम, एंड ये सब चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं. और अगर वो बोलते भी हैं तो देन obviously they have to bear the brunt, क्योंकि then most of us we don't acknowledge कि भाई ये जो सारी stress है this is coming from outside, या हम जो है जहाँ पर गए थे वहाँ से हम ये stress लेकर आते हैं. क्योंकि then again stress में भी you have to connect the dots कि क्या root cause है और उस root cause को किस तरह address करना है. So अगर आपको root cause नहीं पता and still you know कि भाई there's something going on and we need to address it, so जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि you can always go for walk, और वॉक से जो है आपका जो मूड है वो भी एलिवेट हो जाता है, एंड यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस एनी मोर, जो कि उस सर्टन एनवायरनमेंट में रहकर आपको फील हो रही होती है. सो दिस इज़ नंबर वन थिंग. देन अनदर थिंग इज़ कि स्ट्रेस को आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं. यू कैन डू सर्टन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन एज वेल. सो मेडिटेशन में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना यू विल फील अ काइंड ऑफ सुकून. और मेडिटेशन में ये होता है कि व्हेन यू आर इन अ लोनली प्लेस, या इफ़ यू आर इन अ सॉलिट्यूड, तो यू आर एबल टू कंसंट्रेट मोर. और जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन तो जो है ना इट हेल्प्स यू in a lot of things. It not only helps you in reducing those stress levels, rather it also helps you in focusing on your work or your goals. और एट टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं जिनमें आप फंसे हुए होते हैं, एंड when you are meditating or you are doing deep breathing exercises, तो उसमें ये आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं which you are able to solve, जो कि शायद जो है किसी कंपनी में बैठे हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते. सो मेडिटेशन एक्सरसाइजेज एंड डीप ब्रीदिंग इट ऑल्सो हेल्प्स. और इसी में जो है यानी इफ़ यू आर इनटू योगा, you can practice these exercises within yoga में भी जो है certain exercises होती हैं, and then योगा में जो है it's a slow process, so it's not like physical activity कि उसमें जो है जिस तरह exercises होती हैं, exercises में you are physically exerting. योगा में you are not physically exerting, वो ज़्यादातर it's related with mind, body भी होता है बट ये है कि
स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो फ़र्क फील होना शुरू होता है. बट एज फार एज स्ट्रेस इज कंसर्न, इसमें जो है इफ़ यू आर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड यू आर meditating, then it helps you a lot to reduce the stress level. Okay, this is another thing. Plus इसके अलावा ये है कि another thing जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को जो है कंट्रोल करती है, that is having adequate sleep. आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि अगर आपकी नींद कम है तो चीज़ें जो है ना आपको इरिटेट करना शुरू कर देती हैं. लाइक इफ़ यू आर डूइंग वर्क, एनी वर्क, और कहीं से कोई जो है खड़क की भी आवाज़ आती है तो आपको वो भी इरिटेट करती है. तो उसकी क्या वजह होती है? स्ट्रेस जो है, यानी जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व्स होते हैं, वो वैसे ही जो है ना अकड़ना शुरू हो जाते हैं. यू स्टार्ट फीलिंग कंजस्टेड एंड इरिटेटेड, और कोई भी छोटी सी छोटी आवाज़ भी होती है तो वो भी आपको इरिटेट करती है. इसी तरीके से आप ये देखते होंगे, जो आवाज़ों की मैं बात कर रही हूँ, कि किसी टाइम आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं और बीच में एकदम से जो है ना कोई चीज़ गिरती है तो एकदम जो है ना आप अटेंटिव क्या होते हो, आप एकदम घबरा जाते हो, चौंक जाते हो. सो सिमिलरली स्ट्रेस में भी इसी तरीके से होता है कि अगर आप जो है स्ट्रेस में हैं और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको आकर ना इरिटेट करती हैं. सो यू नीड टू एड्रेस दैट. और स्ट्रेस को आप इसी तरीके से भी एड्रेस कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आपकी जो नींद है वो एडिक्वेट हो. अगर आप 8 आवर्स की नींद नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की कोशिश करें ले लें, चाहे तोड़ तोड़ के ही ले लें, वक्फों में ले लें. तो दैट ऑल्सो हेल्प्स. देन अनदर थिंग इज, इसके अलावा, ओके लेट मी सी, इसके अलावा जो, क्योंकि जो लैक ऑफ स्लीप होती है वो ना सिर्फ जो है स्ट्रेस को बढ़ाती है, बल्कि बहुत से जो है ना जो डेली लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उनको भी जो है ना यानी अगर स्लीप ना हो तो आप उससे भी कूप अप नहीं कर सकते. और सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे कि अगर आप ऑफिस गोइंग है और आपको पता है कि आपका हर रोज़ जो है 9 to 5 ढेरों ढेर काम होता है, और ऐसा काम होता है विच नीड्स हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस, तो जो नींद की कमी है वो आपको आपका प्रोडक्टिव काम भी नहीं करने देगी. और यानी मेरे जहन में अब एक वो एग्जांपल आई है. आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिस दिन जो है ना आप नींद से मर रहे होते हैं ना, उसी दिन जो है ना आपकी जो है ना खैर खबर लेने आपके बॉस आ जाते हैं कि भाई काम सही जा रहा है, और वहाँ पर जो है ना साफ नज़र आ रहा होता है आपके मुंह पे कि भाई आज तो मैं नींद से जो है ना मर रहा हूँ या मर रही हूँ. बट ये आई डोंट नो, मे बी मैन कैन ईजिली कंट्रोल देयर स्लीप पैटर्न. शायद ख़वातीन ही कर सकती. तो बट यह है कि स्टिल जो भी हो, चाहे ख़वातीन हो या चाहे मर्द हो, हर एक के मुंह पे जो है ना लिखा हुआ नज़र आता है कि जी मुझे बेतहाशा नींद आई है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. क्योंकि जो कॉमन सेंस की भी चीज़ें होती हैं ना आपको वो भी समझ नहीं आती. दिस इज़ शॉर्ट ट्राइड है और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बातें बता रही हूँ. ओके, सो ये एक चीज़ होगी. अच्छा, देन हम अगर इसमें मज़ीद देखते हैं ना स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस को जो है ना लोअर करने के लिए यू नीड टू हैव अ हेल्दी डाइट. अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं होगी, फ़र्ज़ करें आपकी डाइट में जो है ना क्या होगा, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होगी या आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स होंगे, तो तब भी जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना वो ऑन द हायर साइड होगा. सो उसको कंट्रोल करें, और उसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट ये है कि अपनी डाइट में जो है वाटर की इनटेक जो है बहुत ज़्यादा लें. वाटर तो वैसे ही जो है इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, नाइस टू सी यू हेयर, एंड आई थिंक इट्स, if I recall, if you are the same Fahim. Okay. अब्दुल गफ़ार शाह, वालेकुम अस्सलाम. ओके, सो आपने जो है अपनी डाइट पे भी फोकस करना है. सो उसमें जो है आपके फ्रूट्स हों, उसमें वेजिटेबल्स हों, उसमें ग्रेन्स हों, मिक्स एंड बैलेंस वैरायटी हो. जब एक बैलेंस वैरायटी होती है, अब मैं आपको ये नहीं कहती कि भाई आप बिल्कुल कैफीन छोड़ दो, बिल्कुल जो है ना आप जो है चीनी भी छोड़ दो. अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. आहिस्ता आहिस्ता करके इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स में डायबिटीज़ है या
और किसी किस्म की जो है हेरिडिटरी बीमारी है, तो यू नीड टू गेट रीड ऑफ दीज थिंग्स, और यू नीड टू कर्टेल दीज थिंग्स। तो अगर आप हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, कुछ मॉडरेट मकदार में दालें यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें जो है ना आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी बढ़ाएंगी बल्कि आपको जो है ना स्ट्रेस से भी काफ़ी हद तक जो है ना रिड्यूस करेंगी। देन अगेन एक और जो अहम चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जो है ना यानी स्ट्रेस को आप किस तरह कर्टेल कर सकते हैं। यू नीड टू मैनेज योर टाइम। अब टाइम को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। आपके गोल्स क्या हैं, आप उनको प्रायोरिटाइज करें, और आपकी डेडलाइंस क्या हैं, आपको उनको भी प्रायोरिटाइज करना है। लाइक अगर आप किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ प्लानर। अब उस प्लानर में जो है आपका 30 डेज का प्लानर भी होता है, 15 डेज का भी होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह काम करते हैं। से अगर आपकी जो है असाइनमेंट है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 15 डेज की है, तो आप अपने प्लानर में जो है अपने जो गोल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर लें और नोट कर लें कि भाई मैंने इतने जो एक्टिविटीज़ हैं या इतने टास्क हैं वो इस टाइम में ख़त्म करने हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो काम है वो भी सफ़र नहीं करेगा और आप डेडलाइन को भी मीट कर लेंगे, और फिर उसी हिसाब से आप जो है ना काम पकड़ सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा काम पकड़ लेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, दैट वुड बी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, काम बेशक आप ओवर डिलीवर करें, ओवर डिलीवर यानी बहुत अच्छा डिलीवर करें, जितना है उससे ज़्यादा अच्छा डिलीवर करें, बट ये डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि हर एक बंदे को जो है ना या बंदी को अपने जो है वीक स्पॉट्स का पता होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम पकड़ लेंगे तो उससे आपकी क्वालिटी भी ख़राब होगी और आप फिर अपने गोल्स को भी नहीं मीट कर सकते। सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम। जब टाइम मैनेज होगा तो उसमें आपके गोल्स भी प्रायोरिटाइज होंगे एंड यू वुड बी एग्जैक्टली नोइंग कि मैंने किस चीज़ को किस टाइम पे और किस तरीके से कंप्लीट करना है। और अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो अगेन जो हमारे पास जो है आउटपुट आएगा दैट वुड बी स्ट्रेस, क्योंकि ना काम हो पा रहा होगा और स्ट्रेस भी जो है शूट अप किया होगा, एंग्जाइटी भी शुरू हो गई होगी और भी बहुत सी चीज़ें आकर ना अटैच हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रेस है वो आपके जो है स्टमक पे इफ़ेक्ट करेगा। हर एक को खैर डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करता है। बाज़ लोग कहते हैं जी आई एम हैविंग फीलिंग्स ऑफ बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, तो दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड यू आर अनएबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। सो एंग्जाइटी तो आप या स्ट्रेस लेवल मोस्टली जो है जो हमारे यूथ है वो देखती होगी ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। एग्ज़ाम से पहले कोई फाइनल अगर बोर्ड का एग्ज़ाम है या कोई पेपर है तो उसमें जो है ना वो सारी बटरफ्लाइज निकल के बाहर आ रही होती हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि जी पेपर देना है, पेपर देना, पता नहीं पेपर में क्या आ जाए, तैयारी रेलिवेंट है भी या नहीं है, हो जाएगा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रेस को एक्टिवेट करती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो है ना टाइम मैनेज हो ताकि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो विद इन कंट्रोल रहें। अच्छा, देन अगेन इसमें स्ट्रेस के हवाले से हम एक जो चीज़ देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है मिनिमल रहे या ये है कि आप उसको सही तरीके से एड्रेस कर सकें, तो उसमें सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस सोशल सपोर्ट में क्या होता है, सोशल सपोर्ट में या आपकी फैमिली हो सकती है, आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, जैसे आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं हु आर मोर सपोर्टिव देन योर फैमिली, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लें। और उस तरीके से करने में ये होता है कि ना सिर्फ आपको जो है कंफर्ट मिलती है बल्कि यू दे गेट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, और वो जिस तरीके के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं बीइंग अ फ्रेंड, तो दे आर आल्सो वर्केबल। सो ये चीज एंड दैट हेल्प्स यू टू recharge your energies and relax and reduce your stress level. So good friends and good social support, it's very necessary if you can't get that social support from your families. देन अनदर जो स्ट्रेटजी है उसमें यानी स्ट्रेस को आप किस तरह कम कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर हॉबीज़ और या रिक्रिएशंस। सो यू शुड ऑलवेज engage in things which entertain you or they excite you. सो आप देखेंगे कि जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लाइक अगर आपका जो है माइंड जो है ज़्यादा मसलन एट टाइम जो है जब मुझे स्ट्रेस होता है, व्हाट आई डू इज़ आई रिवर्ट बैक टू माय illustrations and drawings and I keep on doing that. उससे जो है क्या होता है कि माइंड एक तो मेरा जो है साइड लाइन हो जाता है,
जो मैं काम कर रही होती हूँ उसे थोड़ी देर तक हट जाता है, एंड आई कीप ऑन कंसंट्रेटिंग एंड फोकसिंग ऑन द आर्ट वर्क आई एम डूइंग. सो उससे ये होता है कि स्ट्रेस लेवल वो ना सिर्फ कंट्रोल हो जाता है, बल्कि यह है कि जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड प्रोडक्ट, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग दैट यू इंजॉय. Again, then you can refer back to your work, क्योंकि work is something which you need to do if that's your livelihood. So ये है कि you need to have a balance over here. So जब hobbies और recreations होती हैं with work, so you are able to put in more and you are able to do something more productive. So that helps you. Reis, thank you so much for your valuable feedback. And thank you for joining in as well. Mohammad Kamar Areen, thank you for joining in. So this is another thing. Then आपने एक जो चीज़ और करनी होती है, हुसैन बुखारी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. और इसमें आप क्या चीज़ कर सकते हैं, हाँ, एक इसमें आपने एक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इफ़ यू आर ऑन एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेंट्स, ठीक है, डोंट टेक दो स्टिमुलेंट्स, क्योंकि उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, रादर आपका स्ट्रेस उससे बिगड़ेगा. सो किसी किस्म के भी स्टिमुलेंट्स जो कि रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, डोंट गो फॉर दीज नाउ. यानी आई वोंट से कि जो मेच्योर एज के होते हैं दे यूज़ दीज थिंग्स, बट ये है कि येस आई नो कि जो हमारी यूथ है दे आर इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और इट्स लाइक these stimulants they act more as drugs. So they can be either recreational drugs or they can be nicotine भी जो है उसकी भी जो है आदत पड़ जाती है. Then there is खैर in our religion alcohol is prohibited, but still there are people who do go for these things. But then again these are not good things. So उसमें आपका mind आपका इन द सेंस वो लोग who are into these things माइंड वक्ती तौर पे तो एलिवेट हो जाता है, टू गेट रेड ऑफ दैट स्ट्रेस, बट ये है कि वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज्यादती, खैर ये इसकी तो ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए, ये तो इनटेक होनी ही नहीं चाहिए इसकी, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इसके रेपरकशंस और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं. स्मोकिंग के अपने बहुत ज़्यादा हैं, निकोटीन स्मोकिंग में होती है, सो इट कैन इफेक्ट योर लिवर, इट कैन कॉज लंग कैंसर, इट कैन कॉज माउथ कैंसर एंड सो मैनी अदर अल्सर्स. दैन अल्कोहल की अगर बात करें तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा फेलियर्स हो जाते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर और ये सारी चीज़ें. अगर यहाँ पर इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं, they'll be in a more better position to explain you what are the side effects of taking these things. और जो यूथ है, यूथ का तो खैर मैं देखती हूँ, रिक्रिएशनल ड्रग्स की अगर बात करें तो कौन सी ड्रग है जो उनको पता नहीं है. आजकल बहुत ज़्यादा जो इन है दैट इज़ वेप्स. सो वेप्स जो है दे आर मिक्सिंग इट इन शीशा एंड in hookah, and they're just inhaling that, but that's a very dangerous drug. And इसमें रिक्रिएशन वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि at the end of the day it's the parents who are seeing the children suffering, and no parent wants their child to suffer. So why go for these things? Stress level reduce करने के बहुत बहुत अच्छी strategies हैं. You can then always go and visit a counselor or someone who manages stress on the professional level. So that really helps. So don't go for these things जिसमें जो है ना stimulants आते हैं. They are very harmful and they are not overall good for the overall well-being of anyone. Okay, so this is another thing. Then इसके अलावा एक और जो strategy मेरे जहन में आती है, how to reduce stress, जो कि which is a very good strategy, and that is learn to say no. Okay, so this is one thing जो कि ना हमें नहीं सिखाई जाती, and we are not trained for it. If you are a good nature person, you can never say no to anyone, but यह है कि in the long run, बजाय कि after so many years you come to recognize and realize कि भाई अगर जो है उस टाइम पे नो कह दिया होता तो आज ये मसले मसाइल ना होते. अब नो जो है किस सेंस में मैं यूज़ कर रही हूँ कि हम यहाँ पर ज़्यादा बात कर रहे हैं काम के हवाले से. अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब काम आते हैं तो वी आंट अट्यून टू सेइंग नो. सो हम काम पकड़ते जाते हैं, बट ये है कि एवरी वन हैज़ अ कैपेसिटी एंड अ लिमिट.
So if you are in that habit of practicing no and saying no, you can easily overcome the stress and then you won't go to that height. So यह है कि आपके पास एक काम आया हुआ है और आप ऑलरेडी एक काम पे काम कर रहे हैं और आप नहीं ले सकते एंड इट्स टू मच फॉर यू, यू माइट इवन गेट नर्वस ब्रेक डाउन, काम पे काम आप लेते रहेंगे. सो देन दैट्स द राइट टाइम टू say no. So just say no and you can keep your work. So you should not overcommit to yourself, and then you should say no where it's necessary. And then again, you should always set boundaries. No, okay, I'll just take your comments after some time. I'll just try to wind up what I'm saying, and then I can add you people on camera as well. If there's a provision, then I can. Okay, let me see. Okay, मज़ीद अगर हम बात करें कि और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं स्ट्रेस को जो है रिड्यूस करने के लिए, तो यू आर लाइक मोस्ट ऑफ अस वी डोंट वांट टू थिंक पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव थिंक करना शुरू कर देना तो आपके अक्सर जो मसाइल हैं ना वो उधर ही ख़त्म हो जाएंगे और स्ट्रेस तो जो है ना वो आपके करीब भी नहीं आएगी इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव. I won't say it would be eliminated to 0%, but still there would be, then you'll have other things to be stressful about. But yeah, most of the time, just stress, it can be reduced if you think things positively. If you, try to bring out the positivity in every negative comments. Though negative comments, if they are positive criticism, they prone to elevate you to focus more on good things and having a good output. बट ओवरऑल अगर वैसे नेगेटिविटी को देखा जाए तो उसके कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, नो मैटर हाउ पॉजिटिव यू वांट टू थिंक अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं वो सबसाइड हो जाता है. अच्छा, देन जो है इसके अलावा जो है एक और जो चीज़ मैं फील करती हूँ कि लाइक स्ट्रेस, यानी मेरी अपनी ट्राइड स्ट्रैटेजी है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट one thing which I have observed over the years कि जो म्यूज़िक है that also relaxes. Now it all depends कि आप किस किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं. And like जिस तरह मैं हूँ, if most of the time I'm listening to either the recitation of Quran Pak, it's also very healing and very soothing, so I just play different small duas by different qaris, एंड वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. बट देन अगेन देर आर अदर ट्यून्स एज वेल, देर आर सर्टन हीलिंग ट्यून्स और देर इज स्ट्रेस फ्री कैल्टिक और मेडिटेशन म्यूजिक, सो यू कैन ऑलवेज लिसन टू दोज. और उसका भी जो है ना एक बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट होता है, यानी रादर देन आप भाँ 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 सुनते रहें गानों की जिनकी समझ नहीं आ रही, ना लिरिक्स हैं उनके, ना सर है उनका, ना पाँव है. यानी एक टाइम होता था जब बड़े मायनी खेज गाने बनते थे, अब तो वो भी नहीं बनते. अब प्रैक्टिकली बैकग्राउंड में जो है ना ठा 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 शोर, बहुत ज़्यादा जो है शोर होता है. यू कैन नॉट इवन बेयर दैट शोर एंड यू वांट सम साइलेंट एंड सम पीस. सो जिस तरह आप मेडिटेट करते हैं इसी तरीके से जो म्यूज़िक है, इफ़ यू लिसन टू द लिरिक्स, इफ़ डिफरेंट चीज़ें हैं. आप अगर इफ़ यू लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, लाइक जिस तरह मुझे जो है नेचर अच्छी लगती है, तो आई वुड ऑलवेज want to listen to music जिसमें trees हो, जिसमें flowers हो. Then again, if you like sounds of rain, you can play certain music which has rain sounds. और even आप देखें बाज़ दफ़ा जब बारिश हो रही होती है तो जस्ट बारिश में बैठ के बारिश की आवाज़ें भी सुनते रहें तो it is also very soothing. So you can attune yourself towards the elements of nature and you can enjoy nature as well, and that's also stress releasing and you enjoy a lot. और आपने जो भी नेचर में करना है, चाहे आपने जो है वैसे बारिश को ऑब्जर्व करना है या आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई ड्रॉ करना है या और कुछ नहीं, तो गरम गरम पकौड़े बनाएं, एक कप चाय का लें और बैठ के एंजॉय करें और मुझे मुझे. सो दिस इज़ अनदर स्ट्रैटेजी which is time tried and I have tried it myself. And then another thing what you can do is जिस तरह अगर आपने स्ट्रेस रिड्यूस करना हो तो आपको आर्ट हेल्प करती है, एंड आर्ट्स इज मोर ऑफ थेरेपी, सो it works miracles. But if you're not an art person, no worries.
you can always do many other things. Like another thing what you can do is you can start journaling. Now journaling, it's really a good habit. And ये तो यानी अब जो है ये jargons आए हैं, journaling, blogging and article writing. There was a time when journaling नहीं use होती थी in schools. Our teachers, they used to, whenever there would be holidays, or जब भी जो है सेशन का स्टार्ट होता था तो क्लास के पहले दिन टीचर जो है कहती थी कि भाई एवरी चाइल्ड नीड्स टू मेंटेन अ डायरी, और उस डायरी में हर रोज़ एक पेज लिखें कि आपके पूरे दिन में क्या हुआ है. उस टाइम पे ये चीज़ें बड़ी इरिटेट करती थी कि क्यों भाई, पहले जो है स्कूल में जो है कम पढ़ाई करते हैं कि अब घर जाकर भी जो है पूरे दिन का जो है खाता कॉपियों पे लिखें. सो बट देन उस टाइम पे ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कि भाई टीचर क्यों ये कहती है. विद टाइम ये चीज़ें समझ आनी शुरू हुई कि एक तो मेन मकसद यही था कि भाई जब आप ओवरऑल जो है अपने पूरे दिन की जो एक्टिविटी लिख रहे होते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी जो है राइटिंग पावर इम्प्रूव करता है, बल्कि इट ऑल्सो इम्प्रूव योर फोकस ऑन थिंग्स, एंड इट एनहांसेज योर माइंड पावर एज वेल. मेमोरी आपकी इम्प्रूव होती है. देन इसके साथ जो है एक आपकी राइटिंग की स्पीड की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि दी curriculum system or the education system here in Pakistan, it focuses on writing. So if you want your hand to move, you have to keep on writing and practicing. So that's what वो उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ. बट जो अब की बात है, अब जो जर्नलिंग आप करते हैं, इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, इट्स फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस कि it reduces your stress levels and you're able to concentrate. और इवन if you just connect the dots, कि जब आप लिख रहे होते हैं डायरी में तो what happens is कि वो चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही होती है, it is stuck at the back of your mind, and when put it in writing, you have that thing in front of you. So even if you're going to a doctor and you're discussing that. Thank you Mahmoona for joining in, and thank you Afaq Amir also for joining in. Shehzad Digitals, okay, thank you for joining in. So when you're going through those different things, you exactly know, okay, this is the root cause और यही चीज़ मुझे bother कर रही थी. And then you exactly know कि आपने उस root cause को किस तरह एड्रेस करना है. आइदर यू नीड टू विजिट अ प्रोफेशनल, या जो भी आपके वर्क एरिया में कहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रहा है, यू नीड टू एड्रेस इट एंड हाउ यू नीड टू डू इट. तो वो आपके माइंड में ना उसका सोल्यूशन आ चुका होता है. सो दैट इज़ हाउ जर्नलिंग हेल्प्स यू. देन जर्नलिंग में आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर अ स्टैम्प कलेक्टर और इफ़ यू लाइक डिज़ाइनिंग, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. आर्ट अगेन इसमें आ जाती है किसी ना किसी फॉर्म में. देन देयर आर अदर थिंग्स जो कि आप जर्नलिंग में कर सकते हैं. देन एक और जो है अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, इट्स लाफ्टर. सो लाफ्टर के बारे में जो है ज़्यादातर लोग जो है वो समझते नहीं हैं. दे थिंक कि भाई शायद पागल हैं जो हंसते हैं, बट इट्स नॉट दैट. लाफ्टर, इट्स अ वेरी गुड थेरेपी. और अगर जो है आप अपसेट हैं या आपका मूड ख़राब है और आप थोड़ा भी हंस लेते हैं, तो बल्कि आप खुद तो हंसते हैं, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है. और आप ये देखें कि अगर आप हंस रहे होते हैं ना, तो जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो आपको देखकर ऑटोमेटिकली उनका मूड एलिवेट हो जाता है. क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना, हवासी हवासी कहते हैं इट्स कंटेजियस. सिमिलरली जो लाफ्टर होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो कंटेजियस. आप ये देखेंगे कि बहुत सी कॉमेडी मूवीज़ जिसमें जो है ना कोई ना कोई ह्यूमर का एलिमेंट है, और आप वो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हंसना शुरू कर देंगे, और आप इतना हंसते हैं प्रैक्टिकली. आई डोंट नो हाउ मच दिस इज़ ट्रू, बट आई रेड समवेयर कि जब आप हंसते हैं तो आपका अच्छा खासा खून बनता है. सो अगर जो है वो खून जो कि आपको ज़बरदस्ती बनाना पड़ता है, अगर ये नेचुरली आपका बन रहा है, तो वाई नॉट डू इट, एंड वाई नॉट डू इट फ्रीक्वेंटली. बजाय कि आप जो है किसी को अपने इर्द गिर्द देखते रहें जो सड़ा हुआ मुंह बना कर फिर रहा है, एंड यू डोंट फील लाइक लाफिंग, और उसको भी देखकर जो है डिप्रेशन हो रही है और टेंशन नहीं हो रही है कि भाई इससे तो जो है हंसी आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, खुद भी आपको सीरियस होकर फिरना पड़ रहा है. बट नो, ऑन द अदर हैंड, इफ यू जस्ट स्माइल, और you laugh, or you watch movies, okay, you watch movies, so it helps you.
and you can always go for laughter movies or comedy movies, and you will trust me, वो जो 10 मिनट के वो होगा ना टोटा या जो भी होगा, बाज़ दफ़ा जो है ना व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू द सोशल मीडिया, तो उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बाज़ क्लिप्स होते हैं, वायरल क्लिप्स होते हैं या कॉमेडी क्लिप्स होते हैं, जिनको देखकर जो है ना यू आर जस्ट यू होल्ड योर डाइस ओवर देयर एंड scroll is paused, and you just go through it कि भाई ये क्या बता रहे हैं, and you really enjoy. बल्कि अभी पिछले दिनों की बात है कि though I don't watch Indian movies very frequently, but ये है कि वो कोई था, किसी मूवी का सीन था, और I was really enjoying the comedy and everything ना, और उसमें जो है आई डोंट आई डोंट वॉच हॉरर मूवीज, मुझे पता नहीं अजीब सा जो है ना डर लगता है एकदम, वो जो होते हैं ना जंप स्केयर, सो वो मैं उस वजह से नहीं देखती. खैर आई वाज वाचिंग दैट क्लिप, और उसमें वो बड़े जो है हाई फाई जो है हीरोज थे, और वो सारे एक्टिंग कर रहे थे, और उनकी एक्टिंग देख कर मुझे हंसी आ रही, और इतने में जो है ना बस वो जैसे ही जो है ना वो उनके सीन चला ना, तो वो जो करेक्टर थी, तो एकदम से जो है ना उसकी आवाज़ चेंज हो गई, और एकदम से जो ना वो आगे जो जंप स्केयर, उसका मुंह चेंज हुआ, उफला, दैट वाज वेरी हॉरिफाइंग. सो मेरी वो जो हंसी थी वो तो हंसी अंदर ही घुस गई, उल्टा मुझे फिर डर लगना शुरू हो गया. मैंने तो फ़ौरन उसको स्क्रॉल कर दिया और आवाज़ सारी म्यूट कर दी, जहाँ जहाँ जो भी जो है ना वॉइस में एड्स आ रहे थे वो सारे मैंने म्यूट कर दिए. सो दैट टू हैपन्स, बट लाफ्टर इज़ अ रियली गुड थेरेपी. So you should always try that laughter therapy, and then you can always laugh with your friends and family and whoever you are close with, so it really works. और वो आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकता है. अच्छा, देन अगेन जो है एक और चीज़ है, जिस तरह आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं. अब मॉर्निंग में जब आप मोस्टली वॉक करते हैं, दैट इज़ मोर ऑफ अ कैजुअल वॉक, और दैट इज़ मोर ऑफ अ वॉक जो कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं. बट देन अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो देन आप वो वॉक जो है इन अ माइंडफुल वे भी कर सकते हैं. और वो माइंडफुल वे में आप किस तरह कर सकते हैं, लाइक अभी तो चले ना, ये देखें हमारी जो है ना ये फिटबिट्स होती हैं जो हमने पहनी हुई होती हैं, और हम इन पे जो है ना मोनीटर करे होते हैं, अच्छा जी ये हार्ट बीट है, इतने स्टेप्स कर लिए, इतनी देर वॉक कर ली. सो पहले जो टाइम था, पहले उसमें फिटबिट्स वगैरह नहीं होती थी, वी हैड टू कीप द काउंट ऑफ द टाइम एंड हाउ मच कैलोरीज वी बर्न, या हम जो भी इंटेक कर रहे होते थे उससे हम कैलोरी काउंटर से जो है सारा जो है मेजर कर रहे होते थे, या वेइंग मशीन पे चढ़ के कि हाँ भाई आज इतना वेट था, तो कल इतना था, तो ये 15 दिन बाद कितना है, तो इस तरीके से कर रहे होते थे. बट अब जो है, अब अगर स्ट्रेस को आपने रिड्यूस करना है, यू कैन ऑलवेज हैव माइंडफुल वॉक्स. सो उन माइंडफुल वॉक्स में ये है कि यू विल एग्जैक्टली नो कि वेयर द स्ट्रेस लाइज, या हाउ मच स्टेप्स यू हैव टेकन और वट एवर यू हैव डन. So that also helps if you are doing things mindfully rather than doing it the casual way. अच्छा, let me see अगर मेरे और कोई points रह गए हैं. अगर और कोई नहीं रहे ना, अभी मुझे इशू ये आ रहा है कि मेरे बोर्ड पे भी चीज़ें स्टक हो रही हैं. So let me just see, and in the meantime yes, so जो मेरा आखिरी पॉइंट था वो तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इफ़ थैंक यू मेमूना फॉर जॉइनिंग इन एंड वॉचिंग. सो अगर जो है आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड यू आर अनएबल टू पिन पॉइंट वेदर इट्स स्ट्रेस और इट्स एंग्जाइटी और इट्स डिप्रेशन, और इट्स you are unable to manage, like if you have employed each and every of the strategy and you are unable to simply cater for कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम है, then you can always go and seek medical help. चूँकि ये मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, एंड दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच आई एम्प्लॉय over different time whenever I feel like, and I employ different strategies, so they really help me. But yeah है कि if they are not helping other people, you can always go and seek for medical help. जो mental health care professionals हैं, या counselors हैं, you can always seek their advice or whatever you feel like. So this is the thing. And then ये चीज़ है कि
every one should always remember that everyone is different. जो चीज़ एक के लिए जो है वर्क करती है, इट्स नॉट नेसेसरी किसी और के लिए वर्क करे, या कुछ लोगों के लिए वर्क करती है, कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती. तो ये है कि इंस्टेड ऑफ just being stagnant and doing nothing about it, you should always take a step, and your health, your mental health, your physical health, it's very important and you need to take care of it. So that was all I wanted to share regarding how to manage stress, since it's the need of time, and every one of us, we need to do certain things, or apply certain strategies, or have a different perspective about life regarding that particular stress. So this is what I think we need to do when it comes to stress, and this is how we can manage. Thank you, Mushtaba, for joining in and watching. Okay, now let me see if I can take anyone on camera. Okay, let's see. Shehzad, if I can bring you. Okay, I cannot bring you. Okay, who else can I bring on camera? Those who have never come. Well, most of you have never come on camera. Okay, what happened? Did I just scroll it? Yes, I just rotated it. Okay. Well, let's see if I can bring someone. Israr, would you like to come on camera? I cannot. Why is that? It's, rotating again and again. Okay, let's see. Okay, Abdul Ghaffar Shah, you are watching, and I can't bring you on camera. Well, there are many people who would want to come on camera, as I can see them again and again. Okay, there is one, Musa Niazi. Thank you for joining in. You have joined in for the first time, I believe. Okay, let's see. Okay, so if anyone of you have any comments, you can inbox me, or you can share your comments over here. I'll just take your comments and I'll just read out what you are saying, and I can address those comments as well. So let me just check out. Okay, so it's not scrolling more. I guess that's all. That's all the comments I'm having. Alamdar Tireen, thank you so much for joining in. But most of you are watching, so I can't take you on camera unless there's an option of bring them on camera. Only then. Mehmuna, would you like to come on camera if I add you to camera? Okay. No. So no one has resolved this issue so far. Why can't I invite you people on camera? Why does it keep on saying you cannot add the guest? So if anyone resolves this issue, do let me know so I can address this as well. And I would love to bring you on camera and learn about your experiences, what you feel, and what are your experiences regarding different topics that the ones I share, or other topics as well. So if you want me to address any other topic, do let me know in the inbox, or in my messenger inbox as well, or in the comment box. I'll address those, and till then, bye bye and take care. So tomorrow I'll come live again with another new topic, another insight, and another experience to share. Till then, bye bye and take care.